गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और टुडेस टॉपिक इज डायमेंशन। प्रीवियस क्लास में हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करी थी जो आपके सामने लिख रखी है: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. So we shall also perform in a dimension formula like this: m1, l1, t1, k1, a1, cd1 or mol 1. What is a dimension? The dimension is a physical quantity and it's expressed to nature have a 7 fundamental basic quantity of the international system of unit can be called 7 dimension of the world. 7 dimension of the world like this: 7 fundamental quantities which are also talking you 7 fundamental quantities perform mass, length, and the dimension form is properly MLT. So basically, dimension is the form of fundamental unit and perform to each other according to the physical quantity. That is called dimension. Particularly, we can define dimensions of the physical quantities are the powers. Quantities are the powers, exponents to which the base quantity are called. Base quantities are called represent physical quantity. Okay, the dimension of the physical quantities are the power. Expands to which the base quantities are called represent the physical quantity. So we get the form of 7 fundamental quantities in dimension equation as well as dimension formula: MLT, Ka, Cv and mol. So what is a dimension equation? Dimension equation. When a physical quantity is equated with its dimension formula. So obtain this equation is called the dimension equation. Okay, this is the define of the dimension and dimension equation. So how do you find the dimension formula of the physical quantity? Do you know about this? Also, what is the dimension formula and dimension equations? The expression which show how to the base quantity which are required to the represent of the dimension of the physical quantities are called the dimension formula and dimension equation. So first of all, एरिया को परसेंट किया जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को भी एल में मेजर करते हैं, ब्रेथ को भी एल, तो क्या हो गया L2। डायमेंशन फॉर्मूला हो गया M0 L2 T0। तो
So SI unit is मीटर स्क्वायर। ये देखो SI यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। सेकेंड नंबर देते हैं 1 2। then second volume the formula of length into breadth into height, L into B into H, as well as L1 okay। formula हो जाए L3 डायमेंशन फॉर्मूला DF डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा M0 L3 T0 okay। same as well as SI unit is a meter cube। area is shown as a 2D and volume is a 3D, like this cuboid। third mass density फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को प्रेजेंट करते हैं M1 से, वॉल्यूम को करते हैं L3 से। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा M1 L-3 T0 और SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट मास को किलोग्राम में प्रेजेंट करते हैं और मीटर क्यूब। जनरली अपन इस फॉर्म को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में शो करते हैं CGS में, MKS में नहीं करते हैं, जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में शो करते हैं। फाइंड कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज ए 1 अपॉन टाइम पीरियड, so 1 upon t minus 1। so dimension formula is a M0 L0 t minus 1 and SI unit is the second inverse, हर्ट्ज भी कहा जाता है। 5 स्पीड velocity, you know very well about this speed। the formula is a distance upon time। ये formula आपने पता है। velocity is equal to displacement upon time, that is called the velocity। the more difference between the speed and velocity, so speed SI unit is मीटर, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते, टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को की SI यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, मीटर पर सेकंड okay। but this is a main difference between speed and velocity। speed is a scalar quantity and this is a vector quantity, because scalar does mean speed does not show the direction, only magnitude show the magnitude, but the velocity also show the direction with the magnitude, that is called the okay। this is main difference। so अपन बात कर रहे थे डायमेंशन फॉर्मूले की, वहीं आते अपन डायमेंशन फॉर्मूला ओके। फॉर्मूला हो जाएगा ऑल ओवर दोनों का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होती है कोई भी, आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, लाइक दिस L1 टाइम T1। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी, आप लिख सकते हो L1 T minus 1, तो हो जाएगा अपना M0 L1 T minus 1। then I have next is a section accelerations, velocity upon time, the rate of change
per unit time is velocity, that is called the acceleration. Velocity डायमेंशन फाइंड करी थी अपन ने m1 l1 t minus 1 upon t1, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 l1 t minus 2. ओके, और ऐसा यूनिट हो जाएगी अपनी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लाइक दिस. सेविंग फोर्स, दिस इज सिंबल स्मॉल है, फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. F इज इक्वल टू आपने m में पढ़ा होगा, m को मेजर करते हैं. m1 में एक्सेलरेशन का भी फाइंड किया था अपन ने, m0 l1 t minus 2 ऑल ओवर अपना हो जाएगा, ऑल ओवर हो जाएगा m1 l1 t minus 2. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फोर्स. ओके, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट किलोग्राम into meter per second square, that is also called Newton. The symbol is capital N. Then at impulse, it is denoted by I oblique J. I भी लिखते हैं कभी कभी J भी लिखते हैं. ओके, फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम. फोर्स के बने अभी फाइंड करी थी m1 l1 t minus 2 into टाइम की t1 m1 l1 minus 2 और plus 1 minus 1. This is dimension formula of impulse. SI unit is Newton second, because force को न्यूटन में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड. नेक्स्ट अपना आता है 9 नंबर, मोमेंटम. P से सिंबल होता है इसका, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. जनरली P इज इक्वल टू mv अपन शो करते हैं. सो m1 v की आप जानते हो l1 t minus 1 और हो जाएगी m1 l1 t minus 1 मोमेंटम. ओके, और इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड. देन 10 नंबर, वर्क एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स W इज इक्वल टू FdP लिखते हैं. फोर्स की अपने पर फाइंड करी थी m1 l1 t minus 2 और d की l1, so m1 l2 t minus 2. This is the dimension formula of the work and energy, and SI unit is kilogram into meter square per second square, that is also called joule. Energy have two types, kinetic energy and potential energy. Okay, half mv square, half is a constant, m की डायमेंशन हो गई m1, v का स्क्वायर तो l1 t minus 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m1 l2 t minus 2, उसी के इक्वल है, इसी के इक्वल. ओके, तो सेम एनर्जी कौन सी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सेम एज वेल एज. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. m को शो करते हैं m1 में, g the gravitational due to acceleration due to gravitational, dimension is a l1 t minus 2 and h is l1. Okay, m1 l2 t minus 2, same well as the potential energy of the work. You know very well about this. The energy is the form of work and also work is the form of energy. Okay, time is equal to W upon T. We know very well the dimension formula of power, m1 l2 t minus 2 upon t, m1 l2 t ऊपर रिप्लेस हो जाएगा minus 3. ऐसा यूनिट is a watt. Next, pressure is a force upon area. F upon A, m1 l1 t minus 2, area को
L2 में मेजर करते हैं तो हमारी डायमेंशन हो जाएगी m1 L-1 T-2। ओके, ऐसा यूनिट हो जाएगी हमारी, ऐसा यूनिट हमारी। फोर्स को इसमें मेजर करते हैं न्यूटन और एरिया को मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन force upon length equal to force 3 dimension m1 L1 T-2, लेंथ को L1 से m1 L0 T-2। तो सरफेस टेंशन डायमेंशन की हो जाएगी न्यूटन, फोर्स की हो गई न्यूटन। You know that charge is equal to, so I is equal to Q upon T होता है, तो Q is equal to IT। I को मेजर करते हैं A1 और T को T1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q। सो चार्ज आप यहाँ फाइंड कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को किसमें शो करते हैं, A1 और टाइम को T1। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला। और ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका, चार्ज को किसमें मेजर करते हैं, कूलॉम में या एम्पियर इनटू सेकेंड। नेक्स्ट 15 पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की अपन को पता है m1 L1, m1 वर्क की W इक्वल टू FD होता है, FD। और चार्ज अपन को पता है A इंटू T, F m1 L1 T-2 और D L1 में मेजर करते हैं और A T। तो हो जाएगा m1 L2 T-3 और A-1, m1 L2 T-3 A-1। ओके, ऐसा यूनिट इज है पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा यूनिट इज है वोल्ट। डिफरेंस को किसमें मेजर करते हैं, वोल्ट में।